Hello, 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 hello. hello. Long time no see, boys. Long time. Indeed, indeed. Oh. Jinx. uh, यार वैसे हाँ काफी लंबी करी हम लोगों ने ऑफ नॉट डूइंग दिस Yeah, और करा भी yeah. मतलब फ्रॉम ऑल द गुड टाइम्स मतलब काफी बीच में अपॉर्चुनिटीज थे जिसमें काफी अच्छे अच्छे मूड में लोग बैठ के कर सकते थे बट वी चोज टुडे टू डू इट जिसमें सड़ी हुई शक्लों के साथ सड़े मूड्स के साथ बैठे एनालिसिस करने बट नहीं आई थिंक वी नीड टू डू दिस मोर कंसिस्टेंटली मैंने तो खास सो तौर पे एनीवे पिछली दफा नहीं कराया बिकॉज मेरा एजेंडा नहीं हो पाता लास्ट मैच में तो आई आज हो सकता है आज हो सकता है आज हो विकेटलेस सकता है दो यस। दो इनसेन रिव्यूज मतलब आठ पहला वाला तो आठ ब्रो डिफरेंट पहला बॉलर्स। वाला तो पहला Speaks of वाला तो ब्रो desperation, yeah. क्या कहते हैं बराबर वाली पिच पे पड़ी थी इतनी बड़ी आउटसाइड लेग थी उस पे भी रिव्यू उठाया हम लोगों ने दूसरा वाला मैं कहूंगा यार चलो मार्जिनल था माफ मुझे नहीं कर नहीं, दिया दूसरा वही वाला क्लेम भी करना है काफी बेसिकली। आउटसाइड लेग था ब्रो, काफी ज्यादा आउटसाइड लेग। यार मतलब मैं कह रहा हूँ चलो माफी सही है पहला वाला तो वो हो गया, फिर एनीवे उसके बाद आठ आठ अलग बॉलर्स आए भैया आज हमारे पास, ये एक तीसरा भी यार कारनामा वो तो है। आई थिंक चलो चलो उस फिर पर माफ। हम घुसते ही हैं थोड़ा सा सो फॉर जस्ट टू ले आउट द स्ट्रक्चर तुम लोग के लिए भी जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी यार सो लेट्स स्टार्ट मतलब विद द मोस्ट ऑब्वियस थिंग जितना भी मतलब हमें बुरा लगे बट लेट्स डिस्कस द सेकंड ओडीआई आई एम इंटरेस्टेड टू नो थॉट्स क्या कहते हैं इज दिस समथिंग टू एक्सपेक्ट क्योंकि दोनों ओडीआईज इतने कॉन्ट्रास्टिंग रहे कि विच वर्जन do we lean on to? Obviously, the Lulu version, permanent Lulu in us is going to latch on to one version. But so let's start with that and then let's take it from Um, there. So, guys, क्या thoughts हैं? तो मेरे क्या इसके देखा ओपनिंग आज हम लोगों थॉट्स ने? मैं अपने बता देता हूँ. I was of the opinion when we were when we were discussing what we would talk about in this podcast कि हम इसको डिस्कस ही ना करें. And the reason for that is because I personally think कि ये is one of those performances जो आपको बस write off कर देनी चाहिए. I mean, I think we have not looked this toothless with the ball in a long time. I mean, I know there were moments, 3, 4 over spells here and there, जहाँ पे हम थोड़ा सा we seem to be getting back in the game, but nothing of any meaning or any like sort of like Mhm. consistency in that sense. Uh, but I don't think that I think we as a bowling unit are definitely much better than what we showed today. From a batting perspective, I think it was something that we have seen many times. Mhm. If anything, I think the one good aspect of today was that our lower order took responsibility Mhm. and Pulled performed up. really well. I Stood. think the special shout out to Mohammad Nawaz, who seems to be over the last month in like a fantastic form. And I think time and time again he has come in and provided us with some really useful runs. And by useful, I mean not just like how many runs he's making, but at the rate he's making them. He honestly like there's like even in the last match when he came on, it was almost like he was playing on a different pitch to the rest of the batters. Um, so definitely shout out to Mohammad Nawaz. I think Fahim Ashraf's inclusion today proved to be worthwhile, Mhm. even though I personally don't think that this is a long-term choice. He is a long-term replacement of Hassan Nawaz. I think Hassan Nawaz पे discuss करते हैं आगे जाके, but um, yeah, I think one talking point for me is the dropping of Abrar and whether we missed an extra spinner today. You guys go ahead. Before we go into the selections and everything, ठीक है वो rotate भी करे थे तो इतना ज्यादा मुझे हाँ, agreed. मसला भी नहीं है राइट बट एंड आई एग्री विद यू राइट कि नीजक रिएक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि जस्ट बिकॉज इतनी थंपिंग से आ रहे हैं तो बस बट see bowling wise I don't have a lot to criticize on reason being एक तो it was a batting friendly wicket right secondly there was no scoreboard pressure third chances and one sign जो नवाज को Mhm. रिवर्स स्वीप करते हुए डिजोर्जी को that was like a half chance of sorts, so three and a half chances that you sort of dropped. So यार जब किसी भी एस्पेक्ट से लाइक उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है तो आई थिंक इट्स फाइन राइट और एरिया वाइज ठीक है लूज हेयर एंड देयर बट वही बात है कि फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे एंड देन ऑल्सो लॉट ऑफ द Mhm. डिलीवरीज फॉर एग्जांपल इन अ नॉर्मल सिचुएशन वी वुडंट हैव टर्न टू तलत टू बॉल टू 5 overs ही Yeah. बॉल्ड अ लॉट ऑफ लूज स्टफ so there's a whole thing so इसलिए बॉलिंग को आई वुड जस्ट से Mhm. यार ठीक है you guys got a day off Mhm. it's Agreed. okay just Agreed. recharge come back
Batting wise, I do think we need to discuss because it's a pattern, right? Throughout Mm-hmm. Asia Cup, also we saw that lower order rescuing us, and it's good to have that depth. But I think I would like to discuss more, and I'll discuss more later. Also, is the balance of the side with Mm-hmm. about three pace all rounders playing. Mm-hmm. Does that make sense? Especially when you've got the likes of Saud, etc. If stability is you're after, then maybe bring Are them you in. counting Shaheen as a Um, pace all-rounder? no, I'm talking about sorry, that's two. So I was just talking Talat and sorry, three overall all-rounders, Fahim, Nawaz, and Mm-hmm. Talat. Saim Ayub. uh, साइम चलो No, चलो definitely उस an पर बात all-rounder करते हैं now. बट जनरल Yes. जनरली Matlab बट he's ओवरऑल top ranked in like T20. T20 number one all rounder. Exactly, Yes, bro. Top indeed. ranked. Yeah. So anyway, but batting wise, I think it's a journal pattern, Mm-hmm. and that's the bigger concern for me. Okay, देखो especially अगर आपके top four में से all of them have a bad day, you lose 4 wickets, which is never ideal. So anyway, you were always on the back foot. ठीक है, कोई बात नहीं. But when it has consistently happened over and over again, Mm-hmm. uh, I think that's a concern. So इस पे फिर आते हैं. But Subbu Vamu, your thoughts? My thoughts are, I mean, similar to both of you, but I also feel like the only worthwhile thing about talking about here is the top order battling, which is what let us insanely down today. Bowlers, first, मतलब wickets नहीं आई time पे, that was a big concern. पहला power play हमारा मजे का नहीं गया, that was a big concern. Uske baad, you're right. At some point, like halfway through the innings, bowling sort of like lost its kind of interest, kind of mojo. They were experimenting a lot. I think शाहीन ने भी 10 पूरे नहीं किए, किसी ने भी 10 पूरे नहीं किए आज एक्चुअली. 41 ओवर भी पूरे नहीं हमने बॉल किए. 40.1 पे हमने मैच खत्म किया है. तो हाँ, bowling actually was absolutely had lost concentration by the end of it. और बॉटम, क्या नाम है, टेल एंडर्स का सीन ऑन था. सही विकेट शिकेट्स भी लेके आए हैं, ऐसे गेम को भी उन्होंने रिवाइव किया. 90 रन मारे हमने आखिरी 10 ओवर में अपनी अपनी बैटिंग इनिंग्स के. दैट वाज अ बिग वन, दैट वाज एन इंप्रेसिव फीट एज वेल. लेकिन ये फर्स्ट ओपनिंग ऑर्डर लेट डाउन जो है ना, ये बड़ा कंसर्न है उसके अंदर. फिर अब तुम साउथ की बात करो ब्रो, साउथ को तुम कहाँ फिट कर लोगे ब्रो? वैसे ही आज जो 100 बॉलें खेल के गया है हमारा बॉय, अज्यूमिंग यू टॉक अबाउट साउथ शकील, राइट? Yeah, I'm saying Yeah. no. But मतलब for आज example, he could be मतलब a number five. हाँ, If लेकिन वो I'm not saying by the way, South was एज एन just a एंकर टाइप बोल रहे हो ना उसको. लेकिन वो आज सलमान ने सही, हाँ. सलमान सलमान के साथ मुझे आज इतनी ज्यादा शिकायत नहीं है. हाँ, ऑब्वियसली सलमान बुरे दिन पे भी यही करता है, अच्छे दिन पे भी यही करता है. लेकिन आज ये है कि आज उससे काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ही ये था, तो आज वो उतना I don't ज्यादा agree बुरा with नहीं that. लगा Khair, we मुझे. can discuss. नहीं मतलब मैं भी थोड़ा एक क्या नाम है, ह्यूमर पंच लाइन के लिए कह रहा था. लेकिन उसका, लेकिन हाँ, आज इतना बुरा नहीं लगा कि आज उसने जो नॉक खेला वो काइंड ऑफ क्रिटिकल भी था हमारी टीम के लिए. और उसी के, यू Yes. कुड आर्ग्यू कि उसी के बेसिस के ऊपर टेल एंडर्स आके जो कर सके वो कर सके. फहीम की भी बैटिंग से मैं मुतमईन हुआ. उसने ज्यादा बॉलें नहीं वेस्ट की, उसको पता था मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. उसने आके बस कोई लंबी नहीं, 14-15 बॉलें उसने की, वापस आ गया. तो हाँ, बस ये है कि टॉप ऑर्डर वाज डिसहार्टनिंग टुडे. रेस्ट, आई एम आल्सो हैप्पी टू राइट ऑफ द गेम. फील्डिंग वाज ऑफ. फील्डिंग में सतार कह रहा था, मतलब ये भी एक पंच लाइन है, लेकिन सतार कह रहा था कि बॉलर्स वर नॉट गेटिंग हेल्प. एक कैच तो बॉलर ने खुद ही ड्रॉप किया है. जो उसने, क्या नाम है, कैच एंड बॉल ड्रॉप किया था नसीम ने. Was इनफैक्ट नसीम थोड़ा ऑफ द स्पॉट था आज, पता है, इन हिज फर्स्ट स्पेल आल्सो. उसने शुरू में ठीक ठाक रन दिया है, और बाद में उसको में मोमेंटम ढूंढने भी उसको मुश्किल देर लगी है. उसकी थोड़ी लाइन एंड लेंथ भी इधर उधर थी, तो उसको पिटाई भी थी. जोरजी ने भी उसकी पिटाई की है, उसको उस पर भी रन लगे हैं. शाहीन वाज गुड. शाहीन का पहला स्पेल बहुत अच्छा था. पहले 4 ओवर उसने आई थिंक कोई 4 या 4.5 की उसने, क्या नाम है, रन रेट के ऊपर कराए, विच वाज इंप्रेसिव. विकेट नहीं आई, लेकिन शाहीन वाज फाइन, वाज गुड. बट या, दैट्स माय जनरल ओपिनियंस. वसीम यार मोहम्मद. मेरा गेम पे ना कोई खास कमेंट नहीं है. मेरा थोड़ा सा हमारे इस पीरियड ऑफ, पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं फिर तो? नहीं बता रहा हूँ ना, हमारे इस पीरियड ऑफ क्रिकेट को लेके जनरल एक व्यू है, विच इज सेट, आई मीन डेज ऑफ ग्लोरी पास. हम लोग एक ट्रांजिशनल फेज में हैं. वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ मिक्स दैट विल बी द नेक्स्ट क्रॉप. और अभी बिकॉज हम उस एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग फेज में, आई फील लाइक पर्सनली एक दो गेम से, मतलब जो मेरा लास्ट ईयर तक भी रिएक्शन था गेम को लेके कि अब देखना ही नहीं है, बहुत मनूस हो गए हैं. सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड अगेन बिकॉज वी आर ट्राइंग न्यू थिंग्स, वी ब्रिंगिंग इन न्यू किड्स एंड ट्राइंग न्यू स्टफ. तो हर गेम में एक अलग कॉम्बो है, कभी वो चलेंगे कभी वो नहीं चलेंगे. आई थिंक अगले 2-3 साल के लिए आई एम फाइन लूजिंग every other odd game, as long as we keep showing constructive reason of finding the right mix.
तो उस सेंस में ठीक है, मतलब इतनी कोई खास हार्ड फीलिंग्स हम्म। नहीं है। आई थिंक एवरीबडी हैज डिस्कस्ड एम्पल अमाउंट पे क्या हमारी गलतियां थी, क्या ठीक था, सही है बस। ठीक है, एक जीते एक हारे, I guess इतना इजी हम्म। है। लाइक at the end bilaterally था. So, but then बाय I just वैसे want to उस थोड़ा सा ना बायलैटरल ही था zoom मैं in. भी जरा सॉरी गॉन। हाँ, मैं थोड़ा सा जूम इन करना चाह रहा हूँ उस पे, हमारी बैटिंग पे. अब देखो, बैटिंग में आई थिंक हमें ना सेपरेट आउट करना चाहिए, बिकॉज वी कांट जस्ट put all of them under one bucket, right? So people, I specifically feel, and so वो big disagree with you जो तुमने आगा के ऊपर बात करी यार. आगा जी के ऊपर any criticism is absolutely not welcome on this pod, especially when it comes to ODIs ऐसा and नहीं है tests, ब्रो. सही है? हाँ. ये देखो, ये नहीं, अपना नया कल्ट बना रहा नहीं है। ना. ये अरे नेक्स्ट भाई टर्न विल कौन बिकम अ नहीं मोर नहीं, ईयर I'm बाबर एक्सपेरिमेंट टू saying नॉट डू दिस। भाई ये सिली पॉइंट है, तुम no, कवर पे I'm खड़े हो saying गए जाके ब्रो। No, that caveat at ODI the end test was में. important. हाँ. Yeah. So इसीलिए. Anyway, what I'm trying to say, see, for example, Agar Salman in terms of anchoring when necessary, strike rate, हम्म। playing with the tail. So overall, I think Aga for me is completely okay. Like, let's put him on the सॉरी side. 2 सेकंड, आई वाजंट क्रिटिसाइजिंग आगा बाय द वे, आई वाज सेइंग आगा ने आज मतलब आई सॉरी बट अच्छा, या चलो गुड. चलो, we can be friends again. मिसअंडरस्टैंडिंग Uh, होगी। तो अब दूसरा दूसरा player that I wanna sort of strike out from this entire conversation is Saim Ayub, right? हाँ After जॉयस। really long time, पूरी वो उसकी unfortunate ankle injury के बाद, and then a हम्म। horrid run of form, he's finally coming good. Uh, वो सेकंड T20 में वो जो बस somehow वो होता है ना, बस जिद में आ गया कि विकेट नहीं देनी, बस somehow made runs. Then he was third में again poor था, but first, but like overall I think he's finding his feet back again, and I'm happy to continue with him. Right? The people I specifically want to zoom in on are perhaps the people that have been most analyzed in the Pakistan cricket history, the Rizbar group, right? ऑफ कोर्स। And then Hassan Nawaz also I want to bring in, but focusing on Babar and Rizwan, right? So I think let's start with Rizwan for a bit, right? Especially with Babar पे एक Of पूरी course he wants to conversation होगी. start with Rizwan, bro. Obviously he does, but yes, go on. Yeah, Rizwan पे, Uh, see, my biggest. Yeah, go ahead, Abdullah. Want to say? no, I know what you're about to say. So, but you Yeah, you me should you too, should me say हाँ you too. should you should say हाँ, it but first. but हाँ, मतलब यही मैं कह रहा हूँ. मूवी में भी एक्टर्स को पता होता है स्क्रिप्ट क्या है, बट सामने वाले को बोलने देते हैं ना. फिर अपना डायलॉग बोलते हैं. Anyway, यार, see, Rizwan पे my biggest problem is that at number 4, like if I compare him to any other number 4 out there, right? मुझे नहीं समझ आता what his entire game plan is, right? He will come in जब हम क्लस्टर में विकेट्स लूज करें and ensue a complete blockathon. He will come in जब हम नहीं lose कर रहे, and he will still do that. My biggest problem is this, right? And I know, see, I'm not against the concept of anchoring, especially in OD. I'm not proposing कि हम England type team बन जाएं जो बस जिनको sensibility Exactly. is completely out of the window और 220 पे हर मैच में 35th ओवर में आउट हो रहे हैं, right? I'm not suggesting that at all. What I'm just simply saying is कि Rizwan's approach is of extremely high risk approach in the way he plays. Because what he does is, with the amount of dots that he will play, right? And he counts himself, and he has delivered also previously. जब वो बिल्कुल rates to the point that he will finish by a 100 plus strike rate in ODI, which is 100 plus meaning अगर 90 plus भी finish करें, that's Mm-hmm. good for ODIs. The problem is that when he doesn't do that, now that he's consumed so much of the team's resources in terms of balls, he leaves an undue amount of pressure on the rest of them who now not only have a lot of runs to score, but they don't have that many balls to get settled in, right? And that is my fundamental problem with him. He did that in Champions Trophy India. He did that in the first ODI. And he has been doing that for a while, right? And he needs to understand कि यार मुझे 100 plus पे कोई नहीं बोल रहा, but this blockathon needs to stop, right? Strike rotation needs to become a more active part. Scoring shot निकालो, और अगर आपको लगता है यार वो ability नहीं है, then figure out a different role. Your number 4 can't be a guy who is unable to rotate strike. I'll compare him to Aga, for example. Aga has Mm-hmm. no Aga problems was, yeah. rotating the strike Mm-hmm. and just milking those singles again and again, right? And that's what a पूरे number 4 पूरे is yeah. supposed to do. First ODI में पूरी उसने पार्टनरशिप ऐसे बनाई थी। And we have a large enough sample of Rizwan to say कि भाई यही है play. It's not an aberration of one game or the other. Yeah. So I don't know going forward
how long do we pursue? क्या game plan is he open to change? Is someone talking to him about it? Should we try someone else? So anyway, मेरा monologue ends. Over to you guys. I think So, trying oh yeah. with trying someone else. Sorry, Abdullah. Hmm. But I think with trying someone else, we also have to figure out the wicket-keeping situation, which is Exactly, which important is because a I think we've Mhm. tried with Harris and Mhm. it's not it. It's not शाहिद going to जादव be ने a कभी किया long है हमारे term. लिए इंटरनेशनली विकेट की Ooh, एक interesting. दफा नहीं हाँ मतलब I उसने mean, 10 I don't ओवर think he's करा a था, keeper. वन स्टंपिंग मिस करा नहीं था, पार्ट टाइमर है वन एग्जैक्टली स्टंपिंग मिस करी, पार्ट टाइमर ही वन है लेकिन वही ना फुल टाइम कोई और है नहीं वो बच्चा है उसका नाम क्या हाँ था हाँ एंड लॉन्गर फॉर्मेट में जितना आप मतलब आप 50 ओवर में तो यू कांट गो विद अ पार्ट टाइम कीपर यार, द गेम Yeah. इज टू बिग. सॉरी बट वामो, दैट वाज जस्ट वन बट हाँ पॉइंट ऑफ योर्स, दोबारा प्लीज सॉरी. Yeah, no, I Mhm. mean, and the question is कि मेरे भी ख्याल से आगे ऊपर नीचे डेवलपमेंट में कोई ऐसा अभी तक देखा है that could be it, या जिसने कोई ऐसी झलक दिखाई है कि perhaps the torch can be passed. So I think that's going to be a problem finding what to do. And हमारे विकेट कीपर्स की पुरानी आदत है इस चक्कर में कंप्लेसेंट हो जाना, क्योंकि they come very rare good Mhm. keepers. We haven't had many तो of them, and हाँ we've तो seen के इसी चक्कर में 6 6 7 7 साल लोग टीम में और खींच लेते हैं. हाँ no, just one sort of additional point on this. Yeah, I still can't believe a keeper like Kami made a whole career, होल right? Played करियर for ब्रो us उसका करियर like खत्म 10. भाइयों को लगा के चले गया तीनों भाइयों ने विकेट कीपिंग की है अलग अलग स्टेज पे How did he play 10 years being that bad? Anyway, back to Rizwan. Yeah. Abdullah, I know Um, you have thoughts. yeah. So I'll start with most recent first, and then we can discuss the larger issue of Rizwan. So first, obviously, with regards to the first ODI we played, जिसके अंदर Satar, what Satar is referring to as a a हम्म slow knock that he played, I think is 74 की strike rate or something थी. यस इतनी Um, and here's what I'll say. I think that context is important. So again, हम्म I'm being specific to this match. Context is very important. I think he came at a time when we had lost all our top order very quickly. Not all. I think he was playing with initially with Saim, if I'm not wrong. But we'd lost Saibzada and then we'd lost. Sorry, we lost Fakhar and then we lost Babar. Um, and then very quickly after that, we lost Saim as well. Really what he was doing was a rebuilding job, and I think even Satar will हम्म agree that the first like 7, 8, 9 overs that he played of that, it makes sense for him to be a little bit defensive and try to consolidate rather than try to sort of hit back, especially in an ODI, right? In a T20, you'd expect ball one se aaye and sort of put the pressure on the opponent. But I think in an ODI, obviously it's a different game. You have to bat out 50 overs. That means you have to, think a little bit more about like what's behind you and whether they can handle it. So I think definitely the decision for him to play that rebuilding sort of knock, I think made sense. I think his हम्म partner in Salman also was the right guy at the right time for the target that we had. उनका टेम्परामेंट भी मैच कर रहा था was Yeah. yeah What I will say is But while watching it, I do think the dot ball percentage was a little bit higher than it should be. I don't हम्म think actually, Satar, that it was too high. And I'll tell you why. It's because I think we were playing a game where we were chasing to have 263, 264, whatever that four yeah was. And that was essentially a 5.65 or whatever runs and over run rate from the start. At no point in the match, until I think even Salman got out, did we see a run हम्म rate that goes over six, हम्म which meant that, yeah, it was a 74 strike rate, but ultimately that partnership, especially coming after Simon Fakar had already set us up at over six and over, I think हम्म that partnership perfectly did its job. In fact, I will go so far as to say that I think Rizwan should have been man of the match for me, not Salman in that match. And I'll tell you why. It's because I think knowing Pakistan and knowing the situation we were in that game, I think he played a great controlled knock. I think he yeah took the sting out of the bowling, and he sort of like he did. I mean, I think strike नहीं rate but in it yeah in and of itself is not an issue, right? You're right in the sense that like when you play a slow innings and then you leave too many runs for your lower order to get, it puts pressure on them and then it leads to us losing matches. 100% agree. हम्म In this game, I just don't think that was true because when he got out, you had to make what 60 or 70 runs at like 5.6 run over. Come on, man! Like I feel like that is the kind of position in a match where you're हम्म backing your people like Hassan Nawaz and Hussain Talat and etc. who came and Salman who was still playing.
to comfortably make that runs. That's not like that cannot be a reason for why it got tough at the end. Like that simply cannot, right? Like you should expect that even if you're looking at 7 and over for the last 10 or whatever, that should be a comfortable thing Mhm. for a modern ODI side. In fact, even for our side, right? Like Yeah. I think if you look at our ODI record over the last few years also, you'll see that our typical like runs we make in the last 10 overs is like 75, 80 plus. So it's not Yes, that, and this, that but let me finish. So huh. so that's one thing, okay, that I think that in this particular match, I think what he did was fine. He played the situation and he played it fine. Um, Exactly. Yeah. Now with regards to Rizwan as a player, because obviously not every match will be like this where we get a sort of like subpar target where you have the comfort of like sort of eating up these extra balls. Like if the score was 320, I think it would have been a very different game, and Rizwan's innings would have been like a huge issue if he had played that Suicide. same type of innings. Um, but what I will say about Rizwan is I think there's a few things. One, I don't know if you guys remember, but when he initially came into the ODI side, he was not he was not a slow player, right? I think a lot of the criticism that he's been getting more recently is sort of like people conflating Rizwan with Babar in his style. Which, by the way, I think Babar is much worse at this in the sense that if Babar gets out at 25-30, that means he's played 40 balls plus, and then he's put the team in a worse position. And I think that is why sort of Babar was also left out of the side for so long. I think Rizwan, on the other hand, is much more capable of, after he's set, which is like playing an over or two, he is able to sort of start milking those runs. Um, Obviously, that's my opinion. I think stats देखा जा सकता है इस पे थोड़ा सा. But what I will say about him is that, for example, if you look at T20s, I know this wasn't a T20 game, but if you look at T20s, out of all the batters who bat between over 16 and 20, Rizwan has the highest strike rate of any Pakistani players, bar none, right? More than Hassan Nawaz, more than like Shaheen Afridi, more than Babar, more than anyone, right? Which means that he has the potential to accelerate, and he has accelerated on many occasions. What he cannot do is hit huge sixes. I agree with that, which is why I'm not sure if he is a good T20 player, to be honest. But in terms of his potential for acceleration, I think it's there. Another stat is that this was that out of the 13 times that he has actually remained not out in an ODI innings, he has won the match for 12 out of those 13 times he has won the match for Pakistan, which again shows that he is probably our most capable finisher in the team. Um, Again, I'm not trying to defend him here for his often awful performances where him and Babar both have been responsible for like slowing the game down to the extent where it made life really difficult for the rest of the team. But on the second ODI, I think what he did was fine. And B, as Rizwan in general, I think he has the Scored four capability to runs, bro. play. Sorry? Second ODI, he scored 4 runs, bro. 100 की strike rate Oh, थी, sorry, लेकिन sorry. 4 run First मारे. ODI, first ODI, first ODI, first ODI. Strike rate अच्छा था, लेकिन. First ODI. Yeah. नहीं, but overall as a player also, I think he definitely adds value. And I think जहाँ तक मामू की Mhm, बात थी कि कीपर वाली, I think he's absolutely right mhm, in the sense कि मुझे पाकिस्तान के सेटअप में और कोई भी एक मतलब उस लेवल का कीपर नहीं दिखता. I think Rizwan for periods in his career has been the best keeper in the world, to be mhm, honest. So I think I rate him very highly as a keeper. I think as a batter, he really needs to find his sort of like mojo a little bit. Um, mhm. but I think for the next 2 or 3 years, I mean, unless someone comes in who can really sort of Mhm. like make that position their own, Yes. I don't know who else to put there. वैसे हाँ, सत्ता, So, before you go, पता है, I feel like तुम्हारे criticism में दम है. Obviously दम है, मतलब it's one of the biggest talking points of Pakistan cricket for like a year now. Genuinely आप 74 का रन रेट, 75 का रन रेट सही था, लेकिन फर्स्ट मैच में उससे चाहिए ही था. What मतलब this is what was expected for him, and he did what he does really good, which worked out, which was exactly what was needed in the game. So I don't think वहां पे उसका इतना criticism बनता है. दूसरे गेम में हाँ, मतलब उसने कुछ नहीं ज्यादा किया. और ये विकेट कीपिंग वाली बात भी बड़ी है यार. नहीं, absolutely यार. So देखो, a couple of things from my side, right? Number one, when people, जब हम लोग ना strike rate और intents को somehow equate करते हैं boundaries के साथ, right? So for a number for an ODIs to have a higher intent, I absolutely on मारना शुरू कर दे, right? That's not the requirement. That's not his role in the side at all. What I'm simply saying is that it's his inability to rotate. It's his ability, like the dot ball percentage is super high, right? And if you look at the stats, right? So in the last 2 years, he has played 22 ODIs, right?
his strike rate is 75, right? Across last 22 ODI innings, I think is a large enough sample size with Mm-hmm. different kind of scenarios that is coming. So it's a common pattern, right? And that's again, as I said, yeah, to agar I'm able to take up all the time and suck all the pressure out. If I can back myself, yeah, every single time I will do it, which is an unrealistic expectation. Yeah, नहीं कर पाओगे हर दफा, right? T20 World Cup 24 was a prime example, right? बस सोक करते रहे, फाइनली जब तुमने डिसाइड करा तो पहली बॉल मारने के चक्कर में आउट हो गया, right? And Yeah, just but left wasn't too the much only to do one to for blame in anyone that else. sense, by the way. But yeah, No, लेकिन no, चलो agreed. I'm But again, agreed. I'm Yeah, not now saying yeah. I'm not blaming just Rizwan. What I'm saying is my whole analysis is around as a number four, you need to be able to rotate better. You need to reduce your dot ball percentage, and you need to have a higher intent with regards to run scoring outside of boundaries and keep the momentum on, right? Because this current approach is way too high. And as far as other approaches go, keeping is a big point, and I'll touch upon this from a selection point of view. Is yeah, the only way we'll find out if there are other options is if you try people. And I think, by the way, I think Mike Hessen agrees with me on this, and I think that is the prime reason. I know there's a lot of rumors, but I think that is a key reason why he was removed from captaincy because I don't think Hessen sees him as a long-term guy or as someone he intends to pursue with. I think the intent is okay, we're gonna try different people at four, different keepers, because a keeper can also be a six, right? So I don't necessarily exactly, need a yeah. keeper at four. Mm-hmm. South can Exactly. be a four, and I can bring in a keeper for number six role. So I Yeah. think, but overall, I think this one we have discussed enough. I think let's, Abhi, for now, let's just keep seeing, and I hope The Hassan hears this podcast. one thing I will say, Satar, is I agree with you. We definitely should try other people. I think we are a team Absolutely. Yeah. that is really desperate right now for like fresh new Mm-hmm. talent that can sort of like play modern cricket. But one thing I'll say is I think a lot of your analysis on Rizwan also really applies on Babar. And I think maybe the question we should be asking here is how many of these type of players can we fit into one team? Into one Um, team. And then you Even want to if it bring in is South's ODI. team. I think South might be an interesting shout here for the number four position because I think he's a good player, but I think he also suffers He from is a this good issue player. of he can Yep. get bogged down into this like 74, 75 strike rate Mm-hmm. sort of like situation. But having said that, I do think he is much better at taking those singles and doubles and sort of finding those small Yeah. gaps in the field. Probably better than And Rizwan better did as well. against spin. Better That, against spin too. yeah. At this And point, I Asad mean, Shafiq को explain कर रहे हो तुम, bro. You're describing Asad Shafiq at this point. But go on. Uh, but but yeah, I think ये discussion जो है वो मतलब while it applies to Rizwan, I don't think it solely applies to Rizwan. I think this is a sort of Mm-hmm. like typical age-old Pakistani cricketing batting But approach जो बहुत सारे हमारे players के अंदर सीखते हैं. Um, yeah, I mean, and it seemed like for the longest time that Hassan हाँ. and Salman, at least in T20s, were really trying to sort of go against that. I think what we saw in the Asia Cup was a bit weird given that, because Mm-hmm. I think we sort of didn't play that way. We didn't go all out like Hassan Nawaz was dropped for Mm-hmm. Saint Talat, all those things. And I'm sure, I mean, I know हम T20 series अभी नहीं discuss कर रहे, लेकिन I do think sort of it plays in here. Um, कि sort of I feel like at the first sight of difficulty हम लोग अपनी approach को sort of abandon करने के लिए तैयार हो जाते हैं. Which is also something to be discussed. I mean, I think there's this idea of like of England, which is like, you go at 100 miles an hour, 20 foot, like from ball one, Mm-hmm. versus sort of sort of like look at the situation and play accordingly. Um, Mm-hmm. but I think moving on from this aspect, I'd say the one positive sign that we have seen is people like Saim Lind slowly coming to the fore. We saw Babar play a really good innings in the last T20. And so like these are a few play. Fakar came back, played a good knock in the first ODI. Second, McClearly out for duck. But let's वैसे see. would you Um, do you think your opinion of the जैसे बाबर मैं भी एग्री करता हूँ बाबर की वो T20 की आखिरी वाली इनिंग्स काफी अच्छी थी लेकिन वो अच्छी इनिंग्स भी बन गई थी बाय द एंड ऑफ इट बीच में उसने भी ठीक ठाक बॉलें की हैं एक आध जगह भी थी जहाँ पे बहुत शेकी था यू वर लाइक यार विकेट ना लूज कर Yet दे वो ना कर again, दे I एट would दैट पॉइंट say in that scenario, वो एक 140 का chase था that is tailor हाँ made for एग्जैक्टली ना Babar. He could या come and play या his perfect style of इजी innings where he has a bit of रिलैक्स a slow start and then like really gets into it, starts driving the हम्म ball हम्म and like middling the ball, and it all looks really हम्म beautiful and you हम्म feel like he's the best player in the world until you have a 200 run target and the guy has eaten up 30 balls for 40 runs and the team is screwed. एग्जैक्टली It's like that. एग्जैक्टली
And मतलब उस मतलब गेम में बाबर का also I would say Salman देखो was also doing well बाबर की on the other end. बाबर का स्ट्राइक रेट मैं इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा बिकॉज राइट नाउ देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स विद दैट गाय राइट because if you Yeah, look at it, by the way, T20s Speed, वगैरह में भी yeah. like by the way, if you remember the last year New Zealand series, right? His strike rate was like 150. So that guy जब करने पर आए, he does pick it up, he does pick the ante up. ODI में भी इसका strike rate is decent, right? yeah. And again, जो अब्दुल्ला ने एक बहुत important बात करी यार, okay, I can have a Babar, I can tolerate up 80 guy kind of guy if I Exactly. have pillars around Hmm. him who's milking, but I can't have like too Four many of of these. them in the same court. Hmm. But okay, a very important question on Babar. यार करें क्या इसका? Like, और इसको टेस्ट खिलाओ, ओडीआई में इसको मेंटोर बनाओ, किसी प्यारे किसी टेपिए को लेके यार आओ जो जरा थोड़ा तेज प्लेयर हो, उस टेपिए के साथ Yeah, बिठाओ टेस्ट में भी इसको। तो यही सीन है ना यार. टेस्ट में तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है एट स्टेक और बस बंदा मरवाए जा रहा है यार. मतलब क्या no, करें, I कब तक mean, करते I रहे? I think I mean, पहली बात तो by the वो way, his अभी test record is pretty bad. मतलब considering the kind of player he is, you would expect कि he would shine in him to have tests. much better, that's true. Uh, That's true. but it seems like he has too many technical weaknesses to be one of the best players in tests. I think obviously I think he should be in the test squad. I think इसमें कोई doubt नहीं है. No doubt. I also think he should be in the ODI and T20 teams Hmm. right now because पर्सनली एंड ये हम जब सिलेक्शन की बात करेंगे तब हम आ जाएंगे मगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप उसको हटा के किसको डालोगे जो वहां पे बेहतर परफॉर्म करेगा. थर्डली आई थिंक एवरीवन इन पाकिस्तान हैज देयर फिंगर्स क्रॉस्ड दैट बाबर वापस आ जाए कोई तरीके से बिकॉज द Artificially, yeah, बाबर but दैट I वी don't know हैड how. through 2019 till 23 22 23 whatever the kind of player he was even then he wasn't sort of starting off innings with sixes and he wasn't playing at 160 Hmm. throughout. वो तब भी यही कर रहा था where he would like sort of be playing like these sort of build like slowly build his innings and then later on in the innings he would really like take the attack to the opposition and उसकी नहीं वजह से often you would see कि he would finish with strike rates of 150 plus like for example every नहीं time he's made 100 at like over 150 160 170 type strike rates right so because he can sort of put the pressure on after he's comfortable. Now the problem is that he is not getting starts anymore. Matlab, if it Yeah, was a situation where he is making these 30s, 40s, and then getting out, I think this would not be a conversation worth having. But the problem is that when he's not playing well, he's now getting out in 10s and 11s. And yes, that yeah. basically means that he is putting a lot of pressure on the rest of the middle order, especially because I think people, अभी भी at least हमारी team में it seems like ये वो approach है कि बाबर आजम अगर आपके पास आ रहा है, so that means कि आपके पास stability आ रही है and he can like see you through and all that. And I think the 30-20 sort of like confirmed that sort of opinion, like sort of perception of him. Um, and I really hope that in the third well, ODI he Hmm. can smash 100 or Yeah, something because he needs वैसे it. but वैसे here's my चलो, thing, right? हाँ वैसे बोलो. हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि चलो तुम्हें एंकरिंग के लिए एक और अच्छा एंकर मिला हुआ है, सलमान अली आगा, who's doing it क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस फॉर्मेट सही है। और तुम बोलते हो कि भाई रिजवान एज ऑफ नाउ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिप्लेसमेंट कीपर उसको भी keep in the squad में। You want Rizwan to be keeping for you, if you want क्या नाम है, सलमान अली आगा to be anchoring for you in case of a collapse, which is 4 out of 10 times, By I the way, think Salman is 1 out of 5 times। not an anchor for I us. agree. He's I a agree. very solid number five, which means that he will But play he at very 90 often, plus. He will find singles. He will keep rotating, and then has the ability to uh, play with the tail and hit out. So I think Salman is by no definition an anchor for us. He's I, also, I mean, I think if you look at his ODI stats, I think he's been but probably on balance one of the key players for us over mhm, since he's been in Yeah. the team. मतलब वो but 90 प्लस की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करता है 40 के करीब हाँ, उसकी एवरेज है. The 87 guy is 90, yeah। I think Salman is a no-brainer inclusion in the team. I Salman think is a, इसमें तो कोई Ah, doubt indeed, ही नहीं. indeed, Salman is good, but as I a mean, number five, लेकिन yeah. इफेक्टिवली See, मैं my आई गेस इसलिए मैं थोड़ा वो because in my perception वो इफेक्टिवली एंकर रोल पे ही आ जाता है जब ऊपर से कोलैप्स होकर उसके पास आगे गिर जाता है। फिर भी लेकिन सही कह रहा हूँ, आज भी आई थिंक उसने 87 88 स्ट्राइक रेट पे खेला है, तो स्ट्राइक रेट नहीं नहीं मेंटेन आज करता तो है उसने एवरेज। 60 समथिंग स्ट्राइक रेट 69 see, स्ट्राइक रेट पे खेला है तो सॉरी, पहले बट पहले अगेन वाले में, पहले वाले में सॉरी, पहले वाले में वाज किस में। फाइन. आई थिंक आज अगेन आई वुड नॉट ब्लेम हिम द सेम वे आई वुड नॉट ब्लेम हम्म। क्या कहते हैं आपका रिजवान फॉर द फर्स्ट ओडीआई इन द सेंस कि ही वाज प्लेइंग इन द सिचुएशन दैट ही वाज इन. हम्म। uh, so yeah I no issues about yeah. But Salman I think. coming, या
आई थिंक सलमान को साइड में ये सुबह रेड हेरिंग बीच में लाता रहता है। आगा एजेंडा मैं देख रहा हूँ कंसिस्टेंटली। अरे नहीं, मुझे पसंद है सलमान ब्रो, क्या बात कर रहे हो बीच तुम? बीच में वो मीठी छुरी मारता है कि मुझे पसंद है, लेकिन फिर बीच बीच में ऐसा पॉइंट मारेगा कि इट्स लाइक मामू जब शाहीन की तारीफें कर रहा होता है कि हाँ मुझे नहीं पसंद है नहीं ब्रो, लेकिन नहीं नहीं, ये शाहीन मामू ने आज तक वामिक नहीं का कहा। शाहीन। चुप रहा था। हाँ मामू का वर्ल्ड बाबू फेमस ऐसा मीठी एजेंडा। छुरी नहीं, बस सीधी छुरी है यार। बट कमिंग बैक टू द मेन थिंग, देखो यार बाबर का, देखो ओके फॉर मी रिजवान आई थिंक शुड नॉट बिलोंग टू दिया, बिकॉज वो बंदा आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो बस खेलता ही ऐसा है, तो जो खेलता ही ऐसा है, दिस हाँ इज हिज कैप, दिस इज हिज पीक। नहीं चाहिए यार मुझे, मेरे को वो नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बाबर का मसला ये है कि मैं स्ट्राइक रेट But पे that's true for कैसे जज Barber करूं too, जब though. बंदा, बट ही इज हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म, तो But मैं उसको Sarkar, उसका जज करूं एवरेज अब देखो ना, even 2 सालों के even ऊपर when ब्रो। he was absolutely at the peak of his form, this was how he bats. Like, how can you look at Rizwan and say and lay this criticism at him and then नहीं not नहीं apply it to नो Babar? I mean, नहीं Babar when he was नो on बाबर, form was still this player. या no, बट हिज again, एवरेज, guys, you're confusing strike rates. I'm talking about the simple thing of ball rotation. Babar, Even on rotation, how do you get a he 74 was strike rate by never playing a a not. ton of dots? No, when was his strike rate 74? No, no, not 74, it's 77, whatever, 78, what is it? I don't know, something like that. Okay, until 2023, there has been until 2022, right? For the last 7 years, Babar's ODI strike rate was above 90, right? Oh, So really? Babar by no means is a dot ball merchant. Yeah, he's not. He rotates strike well. He again, so I think he was fine. Babar is so horribly out of form. अब मेरा बड़ा Guys, I think क्वेश्चन है we कि यार have कब तक हम lost पेशेंस Vamu करें? बिकॉज due ऑफ to some इलेक्ट्रिसिटी connection ब्लैकआउट, issues, and I think his Like, electricity has gone. इलेक्ट्रिक Pakistan ke या। issues. it's K Electric. So, As usual, it but leaves us coming back to expats to talk about Pakistan. यस सर, लेट्स uh, गो। Sorry, so continue. तो हाँ मेरा पॉइंट है कि यार कब तक हम, मतलब हाउ लॉन्ग डू यू परसिस्ट with him, right? Okay, बंदा, क्योंकि लास्ट if I just look at his As long last as you don't 20 find a 19 replacement, bro. innings, As long as you don't बट find a कैसे मिलेगी? replacement. एक सेकंड, रिप्लेसमेंट कैसे मिलेगी? नेट्स में, राइट? हाँ, किसी को खिलाना पड़ेगा फर्स्ट ना। क्लास अगर से। लास्ट 19 मैचेस पाकिस्तान has played in ODI, बाबर has featured in every single one of them, right? तो कोई नंबर 3 तुम्हें मिलेगा कैसे अगर तुम, Babar की बात नहीं हो यू रही, by कैन the ट्राई way. अ, I think we are all agreed that Babar is. Look, Mm-hmm. I think Babar has the potential to be one of the best players in the world. I think he was one of the best He batters in the world. was, I think he was yeah. probably the best ODI batter in the world for 2 or 3 years between 19 and Mm-hmm. 2022, whatever that was. Again, I don't have any such issues with Babar. I think that my issue was that I think you are that the criticism that you are applying to Rizwan, I think a little bit of it does apply to नहीं Babar as well. And sure, strike rate numbers may not be reflective. I also don't think that that Rizwan's career strike rate, if you look at it pre 2022, was 74. I think it was probably 80 plus. And by the way, in a lot of innings where Babar and Rizwan have played together, Rizwan has finished with a higher strike rate than Babar, and this has happened not in matlab in like तो it has happened often enough. Um, Again, I don't mean to defend Rizwan here. I think we desperately need to move on from players like Rizwan. I Mm-hmm. agree with that, right? I think that that approach generally is there's something that is now नहीं something in the past, and we should move on from players like Rizwan and develop new talent. अब वो हम सिलेक्शन वाली बात पे आ जाएंगे, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो टैलेंट कहाँ है एंड सत्तार आई डोंट थिंक दैट द Exactly. आंसर टू दैट इज कि आप उनको जो है डायरेक्ट ओडीआई टीम में डाल दो। आई थिंक बायलैटरल्स के लिए बाय द वे वी शुड बी ट्राइंग न्यू टैलेंट, सो आई Mm-hmm. मतलब श्योर लाइक आप उसको तो निकाल के मैं दूसरों को ट्राई करो। But I think generally we need to have a obviously this all goes back to the same thing. You need to have a domestic structure that can provide a pipeline. Uh, Mm-hmm. but we यार don't have a और pipeline. ब्रो देखो, और बाबर के साथ दूसरे नहीं बट फॉर्मेट से भी मेरा, हुई है, आप उसको निकालते हो, आप दूसरों को ट्राई करते हो, फिर आपके पास जब, I mean, of course, when you're trying someone, some will have a good day, some will have a bad day, but then we get trigger happy कि नहीं चल रहा, change करो, and the only obvious change is कि बाबर को वापस लेके आ दो, कि हाँ ये खड़ा हो यार जाएगा, मेरा बॉब्स यही भी 2-3 सवाल है कर ना कि लेगा। कब तक हाउ मच लीज डू यू वांट टू गिव हिम, राइट? अब मतलब यार 3 साल हो गए, Yeah, राइट? for sure. डू वी I mean, एक्सेप्ट not, यार, डू वी, yeah, आई I, थिंक चलो फॉर नाउ चलते रहते हैं कि हाँ, आई थिंक मतलब इन द सेंस के चलो, आई होप, बिकॉज यार इफ ही कम बैक, आई थिंक दैट्स व्हाट हसन एंड ऑल आर थिंकिंग, यार अगर ये आ गया ना वापस, तो एक निकल बहुत आऊंगा। बड़ा बर्डन सबके ऊपर से निकल जाता है। हम्म। बाय द वे अब्दुल्ला, जो तुम रिजवान पे बार बार अगेन द डॉट बॉल परसेंटेजेस यू कैन चेक, इट्स Rizwan's ODI क्वाइट हाई strike देन rate is बाबर also आल्सो। 86, by the way. So
Yeah, look at the last 2 years. No, it's Yeah, but the last 2 years, I think if you look at Babar also, I think you'd see that his strike rate isn't that good. I mean, strike that's the rate here thing. is Nahin, irrelevant for but again, Babar in the last 2 years. but unlike Babar, Rizwan is not out of form, right? तो एक बंदा Rizwan, हाँ, फॉर्म में इसका standard लो कम है. स्ट्राइक रेट पर है, डॉट बॉल मर्चेंट बना हुआ है. Yes, एंड but बाय if द you're वे talking, दिस no, ट्रांजिशन but I don't agree with you because I दिस think what you're talking about in the last 2 years, you've seen Rizwan sometimes be the only player who's actually playing an innings for Pakistan. And yes, he's been like that first ODI situation has sort of been the norm rather than the exception for us. And he's obviously played in those बट व्हाट्स स्टॉपिंग हिम फ्रॉम circumstances. नहीं बट व्हाट्स स्टॉपिंग एक सेकंड even in those circumstances what's What is your stopping him argument here? from Are you saying finding that he singles? simply has your, are you saying that he simply does not have the ability to accelerate or find singles? Or are you saying that that Yeah, is no, his situation it's a right now? problem with intent. The way he thinks is the way his mindset works is कि यार बस बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, डॉट 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 खेलते रहो, हाँ डेड हाँ, डेड बैट आ करते रहो, गया डेड बैट जोन करते रहो. में. Easy सही है डेड ब्रो. two. I sat through the Champions Trophy India match and I can tell you I was there live. I cannot Yeah. tell you how frustrating it was. ये Right, मसला तो that's है, my इसमें तो कोई biggest शक problem नहीं है. कि भाई ये बात तो है. सिं- कुछ ट्राई तो कर. अगर गैप नहीं मिला कोई बात नहीं, 3 बॉलों पे मतलब it's not about boundaries and Babar was never this. And by the way, this has coincided with Rizwan forcing himself into the number 4 role. उससे पहले डिफरेंट रोल्स में था. नंबर 4 के बाद आती somehow he's taken upon himself कि यार अच्छा मुझे बस एंड तक जाना है. Anyway, I think Rizwan का presented enough arguments कि अच्छा हम डिफरेंट चीजें ट्राई करना है. अब आई वांट टू रेज दिस वन पॉइंट कि यार ये हम वाहिद मुल्क मुझे दिखते हैं जो कि बायलैटरल्स को इतना सीरियसली लेते हैं कि हम किसी को ट्राई नहीं करते हैं. वही Yeah. शाहीन को सारे मैच खेलने हैं, वही बाबर को सारे Yes. मैच खेलने हैं, वही फखर वैस को जो खेलने हैं, बेचारा वही आज आया है, T20s में हम राइट, फिर भी कर रियलाइज लेते हैं. वही करके. आपके हम्म. नहीं मतलब T20 में भी सबने. एंड आई अंडरस्टैंड, देखो आई अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग इट, राइट. अनलाइक a lot of like England, Australia, India, South Africa players, हमारे बॉयज को इतने फ्रैंचाइज कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते, नहीं मिलता. राइट. सो दे आर नॉट प्लेइंग दैट मच throughout the year like some Cummins who plays like 60 days, 60 to 70 days a year playing test and then furthermore in other formats. Or if I talk about a more active like Aiden Markram की बात ले लेते हैं, right. Aiden Markram साल में कोई 7 लीग्स में खेलता है और हर जगह स्टार्टिंग 11 में होता है. So for him from a financial standpoint it's quite easy for him to say यार अच्छा boys ये वाला मैच हल्का लेते हैं, ये हम्म. मैं नहीं खेलना चाह I रहा, also right. think it's a team uh, admin decision, not just his own. Hypothetical बना रहा है. सही है, बढ़ो आगे बढ़ो. नहीं नहीं मैं एक फाइनेंशियल एंगल बस प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक फाइनेंशियल इंसेंटिव जरूर है हमारे प्लेयर्स के पास क्योंकि यार कमाना भी है, राइट. मैच फीस भी तो उठानी है. आ, एक वो वाला एंगल होता है. एंड बिकॉज हम फ्रेंचाइज लीग में अगेन इतना नहीं खेल रहे होते तो हमारे लिए क्वालिटी कंपटीशन से कंसिस्टेंटली compete करना और अपने Exactly. एसएल का वो स्टैंडर्ड नहीं है और बाकी फ्रेंचाइज हम खेल नहीं रहे, तो अच्छे बॉलर्स अच्छे मैचेस में खेलने के लिए और अपने गेम को टॉप नॉच रखने के लिए यही हमें ऑप्शन है. बायलैटरल्स में ही खेलना पड़ता है, Exactly. राइट. I But Exactly. mean, having said that, having I understand why they're doing it, my problem still remains क्योंकि हमारा डोमेस्टिक बढ़ रहा है and we see कि डोमेस्टिक से इंटरनेशनल ट्रांजिशन में रणजी खेल के जो अच्छा आता है वो मोर और लेस टेस्ट में अच्छा खेल लेते हैं. हमारे केस में कायदे आजम खेल लो या वो कौन सा हमारा लिस्टेड टूर्नामेंट होता है उसको खेल लो या वो ट्रांजिशन नहीं आ पाता. इनफैक्ट हम्म. एग्जाम्पल नहीं, बाबर नसीम ने didn't अब play फर्स्ट क्लास a lot of. काफी खेल लिया, 10 बार नहीं, एक्चुअली मोर. Look at his नसीम ने first अब. class matches. Bro, he debuted at like 17 for Pakistan. He Yeah. was just plucked out. So उसने very बहुत deb. Yeah, डोमेस्टिक. for sure. For sure, for sure. So basically we have found more success with people not to, अगर डोमेस्टिक में नहीं मिल रहा, ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हो, you have to try these different players to try those odds. बायलैटरल्स में नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे यार. How अच्छा, do I लेकिन know मुझे how good सत्तार इस पे. Kamran Ghulam is हाँ. or Hasibullah is or Rohil Nazir is? How the hell do I know that? बट अगर यही वह बाबर रिजवान बस ऑक्यूपाई करते. हमारा कैलेंडर, जैसे अभी साउथ अफ्रीका और हमें कंपेयर करो, अभी इंडिया इंडिया जा रहे हैं, फिर उनका इंग्लैंड के साथ भी सीन है, ये है वो है. हमारे कैलेंडर में भी वो है. क्या.
जो कि तुम again as you're saying is a high quality team, opportunity for boys to learn and stuff. तो वो obviously फिर आपके सारे आगे आ जाते हैं. And I'm not trying to like defend them or anything. मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए. लेकिन इनके ये भी decision के लिए they're kind of pushed in a corner, right? Like what like Shaheen and all of these people that you know are world class. What other opportunities do you have to put them on the world class stage and let them do what they're doing? Like I mean, if you're, it's kind of like यार, it's kind of weird I like have that. a Shweta, few Which one are thing, counters, but I want to hear Abdullah. no, I mean, I agree with you, Sitar. I think definitely we Mhm, should be trying more players in bilateral series. And yeah, I think we do take it a bit too seriously. But again, I think at the same time, what true. you said is absolutely correct, that we don't have a lot of opportunities to sort of like give our players. Exactly. And I think the main thing, at least with this series, has been we've really been hoping we get these players back into some sort of form. And I think they needed to play games to come back into form. And I think that applies to Hmm. Babar, that applies to a bunch of players. So I don't know. I don't know where I'm at on this. I obviously think that we should be trying different combinations and different When players. and how is the, yeah. यार सर नहीं But सर देखो आई अंडरस्टैंड जो कैलेंडर का हमारा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल सो आई एम्पैथाइज राइट आई फुली एम्पैथाइज आई अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग इट बट Hmm. अल्टीमेटली एंड दिस इज वेयर आई थिंक टीम एडमिन ठीक है प्लेयर्स की सेल्फिशनेस हटाओ हैसन एंड द होल एडमिनिस्ट्रेशन प्लेयर्स ढूंढेंगे कैसे राइट देखो फॉर एग्जांपल नाउ आई हैव जीरो कॉम्स अबाउट ड्रॉपिंग हारिस क्योंकि आपने उसको Hmm. 10-11 मैच की कंसेक्यूटिव सीरीज दी डिफरेंट Hmm. रोल्स दिए डिफरेंट असाइनमेंट्स दी नहीं कर रहा उसको बोला कि अच्छा यार तू वापस जा जरा अपने गेम पे काम कर राइट and I want to see more of this, right? I'm happy. And a prime example of this is, for example, अगर हम फंसे रहते हैं कि यार हमारा हम 6 बैट्समैन खिलाएंगे और नंबर 8 हमारा शाहीन होगा, right? Actually, and kudos to Hassan for bringing in Fahim Ashraf back, Hmm. right? And he has been Fair. doing really well. हमारा एक नंबर 8 काफी एक बैटिंग डेप्थ भी देती है, बॉलिंग डेप्थ भी देती है. So I would and I understand. यार फिर मिक्स एंड मैच करो ना, right? Yeah, yeah, Like I'm glad यही Rauf suggestion है. did not play this. Ke Hmm. Salman Mirza played it. Now we actually have a genuine contender to take up Rauf's spot. Uh, इसी तरह I would have loved. और मसला ये बॉलिंग में by the way you will still see some rotation. आज वैस जूनियर ने खेला. Exactly. Way too late in the Hmm. Hassan era. और First by time the by way, the way खेला तुम Hassan कह era रहे के हो अंदर. हमें But हारिस. take then. But Okay. anyway, देखो point is bowling I've seen rotated a lot. Hmm. Right? My problem is यार batting में number मतलब when was the last time we saw a different ODI debut for a top 6 batter? Right? कि अच्छा भाई जाओ खेलो, right? Why is Hassan Nawaz. Fakar playing that much? Why is Hasan Nawaz? चलो, okay, fair. I laid the bar too low for that one. Fair enough. साहिबजादा फरहान का Hussain डेब्यू Talat कब का, बाय द वे? साहिबजादा फरहान का डेब्यू कब का? Saibzada Farhan also a good one actually over the last year. Exactly. Yeah. But T20 है ना? But T20 I'm talking about Uh, अभी हम ODIs की अगर बात करें, but uh, जैसे फकर, रिजवान, इवन आगा टू दैट एक्सटेंट यार मुझे पता है आगा का क्या टैलेंट है मुझे पता है आगा की कोई फॉर्म का मसला नहीं व्हाई इज आगा प्लेइंग इट्स फाइन आई एम हैप्पी टू लूज 3-0 एट होम वो पहली बात तो राइट वो लोग फॉरेन टूर पे भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कोई बात नहीं बस 3-0 व्हाइट वॉश करके आ जाना कोई मसला नहीं Hmm. एंड Again, I बिकॉज think Satar, कोई I और think it's अपॉर्चुनिटी नहीं है ना we are very hungry for momentum, and I think this whole thing comes from insecurity. I think you see the big three and like South Africa, New Zealand type teams who have really good like domestic setups. They've got like, I mean, just overall better setups, play a lot more cricket than us, play better cricket than us, have a much better Hmm. player pipeline. And so I think they're generally far less insecure about this. I think with us, especially when it comes to batting, हम batting order को लेके जो है ना बहुत ज्यादा एक sort of वो approach से देखते हैं कि यार एक अगर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी चल रही है तो उसको नहीं करो उसी को, चेंज आप हाँ. उसको आप Yeah, वो उसी को बस चलाते वही रहो. खेलने दो True. अनलेस मतलब वो जिंक्स हो जाएगी या मतलब ऑफ सीन हो जाएगा कुछ इस Yeah, तरह की थोड़ा डर डर की हमारी अप्रोच है एंड एंड हाँ I think, like for उसका example, रिजल्ट आपको दिख रहा I है ना don't necessarily think like Fakar is a bad choice here because I think उसको भी यही opportunity दी जा रही थी to play himself back into form. Um, but yeah, I obviously 100% agree we should be trying different things. I just think that from Mike Hassan's Hmm. perspective, I think he honestly just does not see a lot of potential in a lot of our upcoming players कि वो उनको बोले कि आओ तुम खेलो. There are, and by the way, here's what I'll also say. I think at the same time as wanting to try new players is definitely valid. I think we've also seen that when you are able to consistently back players and tell them that they are going to stay in the team even if they fail, I think you'll see that that leads to good results.
Saim is a great example of this. I think, I mean, his failures, I think in a past administration, like if you even if you go back 6, 7 years, he would have been out of the team way before he got the chance to make a comeback. And obviously I think partly he stayed in the team because he was bowling so well. So, but Mm-hmm. I think वो हुआ ये उसके साथ भी यही कि you can see the signs of him now making a return and like sort of like starting to sort of find his mojo again. And that's been because I think he's not had that pressure कि every time he comes out to bat that if he fails, like he is out of the team. So it definitely gives you a little bit more comfort, and I think that I hope that the same. And my actually biggest concern was that they aren't doing the same treatment with Hassan Nawaz for some reason, who also showed I was about tremendous to say that. potential when he came to the team. लेकिन उसको बस अंदर बाहर कर रहे हैं, उसको T20 से निकाल दिया आपने, फिर आप उसको ODIs उसकी खिलवा रहे हो, सईद अजीब कंफ्यूजन अजमलिफिकेशन चल नहीं है रही ना है। उसकी। हुसैन सईद तलत अजमलिफिकेशन नहीं है उसकी। yes, Afridiification. Anyway, Hussain Talat also अफरीदीफिकेशन। is a confusing one for me as to why he's in the team. मुझे Uh, उससे as such कोई मतलब ना, but Yeah, man, very good point you brought up. What does why that he man is do? in the T20 team though is absolutely beyond me. चलो I सिलेक्शंस Because पे, हम थर्ड सिलेक्शंस वगैरह पे कॉल स्ट्राइक पे रेट आते हैं, बट 150 जस्ट आई टू थिंक रैप इसलिए अप, उसको लेके जस्ट आदत टू है। wrap up the previous point, I just want to say वो जो I think Abdullah, one thing that you touched upon very beautifully, insecurity. I think that's the underlying thing के बस वही है। एंड बाय द वे उसका इम्पैक्ट हम लोग को इतना दिख रहा है क्योंकि जब बाबर रिजवान पूरा कर रहे थे हर बायलैटरल खेले, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी फकर जमान को बाबर 200 रिजवान मारने हैं तो या वो खेल रहे हैं, राइट? सब कुछ सब 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 चल I रहा है, love that. सबको स्टार्ट पैडिंग, सबको स्टार्ट पैडिंग करने का इतना शौक, और आप आपको दिख रहा है कि यार आप रिप्लेसमेंट ढूंढने निकल लो, नहीं मिल रहे, क्योंकि भाई अच्छा चल रहा था तो आपने कहा जिंक्स नहीं करते, और अब बुरा आ गया तो इतना बुरा आ गया। यू विल सी दिस, राइट? एंड दिस इज बाय द वे, इट्स नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट दैट अप्लाइज यूनिकली टू पाकिस्तान, right? This is applied, like India, for example, is massively struggling with finding a batter number three, क्योंकि कोहली ने इतने साल जगह ऑक्यूपाई करके बैठा है वो, राइट? Sorry, not Kohli, Pujara actually. Kohli was four, and they found Shubman in that. Australia is 2 years after Warner's retirement is not able to find a Warner दैट्स ट्रू। replacement, और अभी उनके साथ और बुरा होने वाला है क्योंकि उनके एवरेज एज गोइंग इनटू देयर एशेस इज 34। जब छह बंदा रिटायर करेगा ना एक साथ, रिटायर and I don't know how they एग्जैक्टली। will build like an By the entire way, test site. So जॉर्ज बेली ने इस पे एक रिसेंटली एक sort of like कमेंट दिया था to shut up the critics on this was कि भाई what तुम मुझसे क्या चाह रही हो? Want me to play inferior players because they are under 30 या हाँ should I हाँ create हाँ। like an arbitrary limit कि आप इतने साल के हो जाओगे तो हम उसको निकाल देंगे, अब अच्छा खेल रहे हैं तो मैं क्या करूं? यार हाँ, उसमें तो खैर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी कंपोनेंट आ गया ना, कि पहले आप वेस्ट इंडीज और इस सब के जो टेस्ट होते थे टेस्ट आप उसमें बच्चों को टेस्ट भेज में देते थे। हाँ, टेस्ट में यू कांट अब मसला ये एफ विद इट टू WTC की मच। वजह से लेकिन कि वहां पे उनके आप डोमेस्टिक्स भी वेस्ट अच्छे हैं ब्रो, इंडीज भी तो उनको। खेल रहा है, वेस्ट हाँ। इंडीज भी खेल रहा है, तो आपको वही स्टार्क, हेजलवुड, लायन और कमिंस ही उतारने हैं, बिकॉज आपको डर ये है कि अगर बच्चों को उतार दिया और 20 विकेट्स नहीं ली और फजूल के पॉइंट्स हमने दे दिए और फाइनल हम खो गए, राइट? एंड दैट हैपेंड लेकिन एक्चुअली, ऑस्ट्रेलिया डिडंट मेक द फाइनल बिकॉज वेस्ट लेकिन इंडीज बीट उनके वन ऑफ देम। उनके दैट केस वाज में बाय द दूसरे वे एन पाइपलाइंस भी है एक्सीलेंट। ना, वो जो तुमने पूरी डोमेस्टिक वाली जो हमारी क्रिटिसिज्म की है, वो उनके केस में काफी बेहतर है। तुम कि चलो सही है कि उनकी Yeah, by the way, but that only applies to नहीं, Australia, India and England is अलग, South Africa का domestic उन्हीं की बात structure कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नहीं, South Africa bro, South Africa का उनकी साउथ तुम अफ्रीका की नहीं करो, कर रहा मैं, उनकी बिग थ्री की बात कर उनकी टॉप बिग 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 थ्री को हाँ। छोड़ दो ना, बट साउथ अफ्रीका का, न्यूजीलैंड का बाय द वे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नामी कोई चीज नहीं है यार, इतनी सी पॉपुलेशन, वो बेचारे हमसे कुछ खेल बेहतर है। नहीं पाते। 11 बंदे खड़े कर हमसे लेते हैं, बड़ी बात। स्ट्रक्चर वाइज बेहतर होगा, Yeah, बट इन टर्म्स Sattar, ऑफ here's what I'll कॉम्पिटिटिवनेस, हाँ say. हाँ। You're right, it's not competitive, right? But I'm saying that they are able to form a pipeline, right? So हम्म। they are thinking in terms of they've got these players who are development mode में चल रहे हैं अभी, and then they've got their main team. And you'll see often, even with New Zealand, even with South Africa, that they will keep trying these new combinations. I mean, people like Breedska, who is in the team, even which is Tizorzi, who is a exactly decent which is option. what they're doing Like right these now. guys have come and like really like तो changed the भाई way मैं South वही तो Africa कह रहा plays हूँ ना, cricket. So like I do think we need to try तो more of मेरा that. भी तो ये, But I don't. Bro, हाँ, the thing is, हम लोग यहाँ बैठ के बात तो कर सकते हैं, लेकिन we don't know the talent that we are dealing with. Like I'm sure that before Breedsky gets a game, like the South Africa coach probably spends a few days with him in the net, spends a few days with him, looking at his domestic performances and stuff like that, and bases it on that. You can't just like pluck one up, be like, आज इसको हम्म। try कर लिया, कल उसको try कर लिया. उसको There has to be एग्जैक्टली some data एग्जैक्टली points that you go on. एग्जैक्टली। I'm saying we are missing those data points because our domestic is so bad. A, B, our general player development is so bad, and also I think, which I mean, again, I would love to know what goes on inside the PCB, but
I don't know if we are actually like what the analysis is behind the scenes. Like what is the data they are looking at? What मुझे are they मुझे trying लगता to है sort of नहीं achieve? अब्दुल्ला, लेकिन पता है मुझे वैसे साउथ पर्सनली लगता अफ्रीका है इज अ कि गुड आई केस थिंक ये हियर सफाद. ओवरऑल, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका इज एक्चुअली वेरी गुड केस टू केस कंपैरिजन गिवन के अभी मतलब उनके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात हुई, लेकिन उन्होंने फिर स्क्वाड डेप्थ बनाई है. 2 विकेट कीपर है दोनों उसके मतलब एटलीस्ट एक वर्ल्ड क्लास है, दूसरा अप्रोचिंग वर्ल्ड क्लास है. और अभी पाकिस्तान के अंदर बेसिकली उनकी डेवलपमेंट टीम ही है, मतलब ये सारे उनके डिकॉक को खड़ा कर दिया चल भाई तू अपना हाँ, वापस आ जा एंड स्टफ लाइक डिकॉक को दिस. सिर्फ इसलिए खड़ा किया क्योंकि वार्म अप कम बैक है वापस उसका बस, एग्जैक्टली ना अदरवाइज ही वापस वुड आ हैव जाए नेवर बीन इंडिया के ट्रेंड। लिए, इंडिया के लिए तैयार होके आ जाओ एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन हाँ फिर टेस्ट में इनका वो वाली तुम्हारी वाली बात सही है. टेस्ट में उन्होंने प्रॉपर because उनको वही WTC वाली चक्कर थे क्या थे वो प्रॉपर स्क्वाड वो जहां तक हाँ टेस्ट लेके आ एग्जैक्टली। सके, टेस्ट टेस्ट पे ट्रायल जहां तक वाला लेके पीरियड आ खत्म सके हो लेके चुका है। आए. लेकिन ब्रो हम लोग we are how many teams do we have which are a Pakistan to us from the like what Pakistan is to South Africa, how many teams in the world do we have that are that to us. अगर अब मुझे कैलेंडर की मुझे साउथ अफ्रीका की विजुअल तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता है कितने ओडीआईस खेल रहे हैं साल में. पाकिस्तान का दूसरा सीरीज तीसरा सीरीज है हमारा साल का, इसके बाद ब्रो हम जाके ओडीआई शुरू यार सब होंगे. बहुत कम, ओडीआई सब ओडीआई नहीं, सब कोई भी नहीं खेल सब रहा। ग्लोबली, ग्लोबली पूरा यही हाल है। एंड वी हैव प्लेड लाइक अभी हमारी ट्राई सीरीज आ रही है। एग्जैक्टली ना अभी हमने नमीबिया और ट्राई सीरीज जिम्बाब्वे, यूएई में खेली है। नहीं नहीं यूएई नहीं और अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान और ने श्रीलंका यूएई एंड उसके जिम्बाब्वे. साथ यस खेली है। यस यस यस. तो देयर इज गुड इनफ और मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बट आई हाँ थिंक साउथ बस अफ्रीका वही है नमीबिया कि खेल रहा है. सॉरी सॉरी गो ऑन मैं कंफ्यूज. हाँ तो बस आई थिंक हम ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं कि हमारा डोमेस्टिक वगैरह कितना बुरा है। आई थिंक इनसिक्योरिटी आई स्टिल बिलीव इज द बिगेस्ट रीजन बिकॉज देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम लाइक प्लेइंग एक दो मैचेस भी खिला दो लोगों को, ट्राई अगली करो ट्राई यार, सीरीज में मतलब भेज दे. और हमारे लिस्टेड प्लेयर्स देखो यार, नंबर्स हैं लोगों के पास, राइट? रोहिल नजीर के नंबर्स हैं एंड देयर इज अ होल बंच, कामरान गुलाम के नंबर्स हैं, देयर इज अ होल बंच ऑफ क्रॉप ऑफ प्लेयर्स जिन्होंने To be fair, प्रोड्यूस Kamran कर Ghulam दी हैं। has been tried, and by the way, I think he did show encouraging signs. I don't know why he just disappeared off the face of the planet. It's a bit weird. There's also like I don't know उनको how बॉबी true की जगह मतलब, बनानी थी, ही बेसिकली वाज कंपीटिंग विद बॉबी फॉर अ टेस्ट स्पॉट। which is a good thing, which is But exactly what again, we need Bobby's someone back to in the do, team in order man. to build up his form again. I don't know if that's a bad call. I हाँ mean, especially after that last Yeah. T20 innings, चलो I did In want to चलो see आई him in थिंक play. ODI, it's वैसे exactly in ODI it's still fine, but T20 में just like why can't we just write him out? Why can't we just like अच्छा सही अब तू फोकस उस पे कर, तू फर्स्ट क्लास खेल, टेस्ट के लिए तैयार हो, ओडीआई खेल, T20 ब्रो में ये भी गुलाम तो एक सलाम खुर्रम ये भी तो शुर्रम सबको. एक जेन्युइन मसला है ना। मतलब बाबर सिंस ही वाज ड्रॉप डिड नॉट प्ले एनी प्रोफेशनल मैच, तो हमारे बॉयज का इनसिक्योर भी है और कंप्लेसेंट भी इंतहाई है यार। ये मतलब ये कैसा एटीट्यूड, Yeah. राइट? पूरा ये एक कायदे टू आजम ने हंड्रेड खेला मिलियन होगा. 20 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन मी एंड मैं भाई बात ही नहीं कर रहा यार, कायदे आजम ट्रॉफी इज बीनीथ यू, दैट्स फाइन, राइट? County खेलो। कुछ तो मेहनत कर, कुछ तो कर क्या, अच्छा यार मैं ये कर रहा हूँ अपने आप को वापस लाने के लिए, राइट? तुम तो मतलब बस पेरिस घूम रहे हो और पता नहीं कहाँ कहाँ वर्ल्ड टूर में निकले हुए हो। बैगी यहाँ पैंट्स 30 मिलियन पहन रहे पीपल हो क्या कहते हैं मूड खराब fucking. करके बैठा था तुम्हारी बैठ। Yeah. Two examples. हाँ बोलो बोलो। Two examples I would बस like to give who actually have done this and have shown that there is a comeback to be made. Mm-hmm. Shan Masood, one. Yeah, definitely Exactly. Shan Masood, who Watford. went and played county and really Mm-hmm. sort of understood the game Really. in Mm-hmm. a meaningful way कि Mm-hmm. वो आके उसकी contributions बड़ी useful हो गई. Mm-hmm. Both in terms of Imam as a Haq. batter and especially in terms of as Mm-hmm. a captain. Imam recently, yes, that's a good point. I Yeah, wasn't yeah. actually even going to name him, but he's done well. He's done well. And the third name I would say is Hassan Ali, फहीम नवाज। who showed also like went and played a lot of cricket outside of the international team and came back stronger in tests at least. हाँ है ऐसे examples and I think इनकी है and ब्लूप्रिंट I तो है. think I think ये होना चाहिए. You're absolutely Mm-hmm. right कि मतलब ये attitude जो है ये बहुत problematic है and I doubt that it's just Babar who this applies to. I'm sure it's many players. हाँ ब्रो, Um, And I'm also नसीम and I'm ऑल्सो, नसीम वाज ड्रॉप्ड yeah. आउट Naseem, बिकॉज yeah. ऑफ फॉर्म कंसर्न्स। और भाई उसने अपनी फिटनेस बुरी कर ली, और राइट अगर मैं ड्रॉप स्प्राइटे हो पी रहा हूँ और मैं रहे एक I mean, बिरयानियां एस्पायरिंग खा क्रिकेटर हूँ I mean, मतलब अच्छा क्या एक चीज सीन मैं है ये बोलना यार? चाहूंगा कि आई थिंक ये हम बड़ी वो सॉर्ट ऑफ लाइक वो अप्रोच है, ट्रिगर हैप्पी अप्रोच कि हम रहे. लोग सबको बस ये बोल देते हैं कि यार बिरयानियां खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. आई मीन हाँ वो तो मैं पर्सनली वैसे ही मीम का मजाक उड़ा रहा I do think था. I do think खाओ बिरयानियां खाओ and बॉयज. by the way even on Naseem and Naseem's fitness I do think he has been bowling better by the way and I know कि उसके numbers इतने reflect नहीं हो रहे लेकिन उसकी actually अगर आप bowling देखो तो अच्छी करा रहा है.
अगेन लुक्स पे आई थिंक नसीम हमें नहीं जाना चाहिए. यार आई डोंट नहीं नो नहीं इफ ही इज हम्म, अनफिट बिकॉज नहीं थोड़ी सी नहीं उसकी मैं तौल हम्म। दिख रही है. नहीं नसीम नहीं नसीम वाज बट गुड इन द मैं फर्स्ट कम ओडीआई नसीम नो की नो लाइन और लेंथ अब्दुल्ला प्रॉपर अब्दुल्ला टेस्ट बॉलर वाली मैं थी मैं I'm just talking about what this represents in terms of attitude. आई एग्री विद यू या. With a body fat percentage of over 30 has scored like 12K runs. तो ठीक है. I'm not saying ओए! कि थोड़ी सी तुमने बिरयानीज खा ली तो is a problem. What I'm just trying to highlight is an attitude problem. कि यार तुम अगर outside of the side हो, मतलब what are you doing to get back in and be at the top and be the best version that you can possibly Mhm. be. But I think just to summarize, I think all of us are really hopeful कि यार different चीजों को Yeah. try करना. वो भी एक अलग एपिसोड है जो शान मसूद के साथ उसको एक मैनेजमेंट रोल भी मिल गया, फर्स्ट टेस्ट कैप्टन टू मैनेजमेंट That रोल, was so बट weird. हिज What was that? अपॉइंटमेंट But also by उस the पे way करेंगे गाइस. आई वो थिंक भी ये बहुत बिल्कुल एक एक पर्टिकुलर टेंजेंट आ 2 सेकंड जाएगा. 2 सेकंड नहीं नहीं अब इस पे टेंशन है और उसको तुमने एक रोल दे दिया एडमिनिस्ट्रेटिव फेयर इनफ लेकिन उसका रोल एक टीम डेवलपमेंट रोल नहीं नहीं है बट ही इज नॉट पिकिंग आउट द स्क्वाड ही नहीं बट हिज पार्ट ऑफ इज द मीडिया असाइनमेंट एंगेजमेंट इज no, part of the assignment is Pak Shaheen's के tours. And I think वो जो डेवलपमेंट पाइपलाइन की हम बात करें ब्रो, इंडिया ए के तुम देखो वो साल में ना पाकिस्तान से ज्यादा मैचेस खेल लेते हैं, इंडिया ए अलोन. एंड आई थिंक दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ व्हाई दे हैव अ रेडीमेड टैलेंट. एंड पाक शाहीन इतने ज्यादा नहीं खेलते, तो विद हिम आई एम आई होपफुल सी कि इन द कमिंग डेज वीक्स एंड मंथ्स शाहीन थोड़ा ज्यादा खेलना शुरू करेंगे एंड होपफुली वो पाइपलाइन हमारी ज्यादा बनेगी. बट एनीवे आई थिंक जस्ट टू रैप अप आई एक्चुअली थिंक और आल्सो सत्तार बिफोर यू गो ऑन टू योर रैप अप तुम लोग जो चावल गिन रहे थे एक मुझे बॉय याद है जिसको मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ जिसके मैं चावल गिन रहा हूँ उसने चावल कम किए वो है आजम खान कोई 10 किलो गिरा दिया है बंदे ने ब्रो बंदा मैं अब ये नहीं कह रहा उसको टीम शीम में लेके आओ मैं कह रहा हूँ अगर चावल गिन रहे हो तो उसके भी गिनो सही है बाकी आगे का मिस है ब्रो, आजम बहुत ज्यादा मिस है. I mean, हाँ I mean, I wish Azam all the absolute best एब्सोल्युटली for his T20 पेज 8 का league हाँ. एबी careers. डिविलियर्स ब्रो And पेज 8 का एबी डिविलियर्स है हमारा बॉय उसकी तुम लोग को वीडियो याद है शुरू में जो आती थी ओ भाई जुल्फिकार हाँ. स्ट्रीट 1 से 8 तक छक्के मार रहा है लड़का Anyway, I just sort on closing thoughts, right? कि चलो हमने ODIs की बहुत ज्यादा बात करी. Third ODI में I think I'm expecting a better show, but I'm interested to hear कि what would be the changes that you would make. हम्म I'll start with myself, right? One change that I would definitely make is Talat for Nawaz, Hassan Nawaz, उफ, and that's not out of कि that will guarantee us a better win. I just think in the longer term, I want to हम्म give Hassan Nawaz a more standing ground and उसको गाइड करो यार. नंबर 6 में ठीक है, इट्स नॉट T20 बस हर बॉल पे आके निकल मारना है, तो उसको गाइड करो in becoming a better ODI number 6 and the difference between ODI number 6 and T20 number 6, but definitely him. हम्म Secondly, I think we will have to make a compromise between batting and bowling depth, right? I think having Fahim and then Nawaz and Wasim हम्म and then Naseem, so basically आज हम by the way 11 तक बैटिंग कर रहे थे और उसका बेनिफिट भी लिया. बट देन यू वर बेसिकली एट अ पॉइंट जब दो लेफ्ट हैंडर्स बैट कर रहे थे और नवाज को आप बॉल नहीं दे सकते थे नहीं दे और सकते थे पेसर से कुछ हो नहीं रहा था. हम्म और सलमान आया साइम था को बीच वो में साइम भी आया था साइम और सलमान को ऑफ स्पिन बट वो नहीं चला, राइट? नहीं यू चला नीडेड अ फ्रंट लाइन bowler who could bowl to front line spinner who could bowl two इनटू left द handers. लेग अगर यही या राइट ही होता बाय द वे ना, तो मैं बता रहा मैच इतना बुरा नहीं होता बिकॉज एग्जैक्टली नवाज 10 इकोनॉमिकल ओवर दैट्स ट्रू निकाल देता बीच से, निकाल राइट? देता और कुछ हो सकते एक या दो विकेट भी दे देता. साइन भी एक आध विकेट निकाल लेता यू राइट बट बट साइम पे आई डोंट वांट टू रिलाई, राइट? साइम फॉर मी इज अ गुड बैकअप, राइट? तो अगर साइम मुझे ऑप्शन वो दे रहा है का, माय प्रेफरेंस स्पेशली T20 में चल जाता है. इन ODIs आई थिंक यू कैन नॉट गो विद दीज half bowlers, right? 10 overs is too much for a half bowler. So I would definitely want, instead of Fahim, despite all the strength that he gives to us, an Abrar back, right? ताकि मुझे पास 4 प्रॉपर bowlers हो और जो फिफ्थ फिर स्पॉट है, so नवाज, शाहीन, वसीम, एक्चुअली मेरे पास पूरी एक bowling वही लाइनअप ना हो. एंड देन अगर कोई बुरा दिन किसी का जाता है, then I want to go to Saim and Aga. But I don't want to count on them too much. And अगर करना भी है तो then I would drop one pacer यार. You cannot go वही मैं into an कहने वाला था ODI अभी दैट्स व्हाट आई वाज without a गोना front line spinner. आस्क So that's two changes that I would definitely make to third ODI. And I think overall we should do well. But to be honest, हार भी जाए तो इतना मसला नहीं है यार. लेकिन It's just Sata bilaterals. just to get you right so you would want
four full-time bowlers, and you would want three of them to be seamers, and you would want one of them to be a spinner, right? Minimum. So four front Yeah, I line like. and Saim Mhm. sort of As आखिरी backing वो you up. आखिरी के 10 वाले आप इधर उधर कर To लो. be Yeah, I honest, agree yeah, with that. part timer. I would say no. But Just so I don't part timers. No, so I think the fifth bowling option has to like because part timers यार 10 ओवर नहीं दे सकता आपको ओडीआई में. हाँ, ठीक है. लेकिन between तो Siam and between like Salman and all of these people, तुम 10 ओवर तो निकाल लोगे ना. नहीं नहीं निकाल सकते. दो पार्ट टाइमर्स आप 10 ओवर नहीं निकाल सकते, स्पेशली अगर टीम आपको उनको टारगेट करना पाए, जो साइम को आज टारगेट करा. राइट, दे Yeah. केम विद द इंटेंट, क्योंकि यार उसको पार्ट टाइमर रेस्ट फिर आपको दिख जाती है. राइट. सो आई वुड एक्चुअली वांट नवाज एंड अबरार टू बी देयर, शाहीन टू बी देयर, दैट्स 30 ओवर्स डन, एंड देन नसीम नसीम आ गया फोर. 40. हाँ, 50 तुम कह दो वसीम. सो देन फिफ्थ या तो वसीम को खिलाओ, या वसीम को अगर ड्रॉप करना तो फहीम को खिलाना. बट देन नो दिस कि आप फहीम आगा साइम के दरमियान आप 10 ओवर निकालने में एक रिस्क तो ले रहे हो, बट ले चलो रहे हो. थ्री बॉलर्स कंबाइन करके कुछ ना कुछ निकालेंगे. टू स्पिनर्स आई थिंक इज अ वेरी बैड कॉल इन ओडीआईज. I Let's say think it's a I'm kind of against. Sorry, I'm kind of against dropping Wasim. I would like to see more of him. He just came back after a long hiatus, सही है, and ड्रॉप फहीम. he was in good colors today. He was doing well for himself. I would like to see more of him. Fahim, yes, this may I would also go to the Abdullah thing, or maybe you said it, which is the fact that we know this man is in red hot form. He's doing well for himself with the ball, with the bat, and he can be afforded to rest one game. So perhaps take him off for a bar. That's also like that's actually a good idea, and that solves your problem. You have Hassan Nawaz, you have Abrar, then you have the three paces in Shaheen, Naseem, and Wasim. That rhymes weirdly. And you're in a good place. I think that's a good place to be. But you do compromise the batting depth in Fahim, and how would you make up for that? Because you even today, bro, that 24 off of 14 was so critical, man. That was integral to But whatever we you were bat able to till achieve. 7. See, my point is you bat till 7 Shaheen if you have a Naseem and if you have a Wasim, right? So I think that combined together में से एक तो चलेगा, that gives you that sort of iffy number 8 20-25 that रन you're दे sort of दिए तुम्हें. looking for in हाँ. ODIs. बाकी यार अल्टीमेटली 7 लोग खड़े करें ना बैटिंग के लिए, उनसे बोलो अपना काम एग्जैक्टली करें ना. यार. यही तो मसला है सारा मतलब यार. let's यही not तो be India मसला. about it. And India lost way too many critical matches because of this genuine obsession हम्म. with कि बस number 8 needs to be able to bat, right? कि भाई मतलब I don't want to compromise on the core ability of bowling. नहीं, ये तो मसला है. ऑल्सो भाई तो एक टॉस के बारे में हमने आज बात नहीं की, लेकिन चलो. सही ब्रो, आज पे हो गई बात. टॉस से पे really quickly I'll just say हम जीते थे ना टॉस. Yes, Yeah, so I बहुत ही think that stupid Chose था. to bat no, first. I think this was probably. I mean, I don't know if that was the justification they gave, but I assume it's You probably because we've been chasing throughout the series, so I think we probably wanted to see how we perform batting first, which is a fair call, I would say. Anyway, Satar, I think you said it all. From my perspective, I think yes, you definitely need to bring Abrar back. I don't think you can play Mhm. an ODI match in Pakistan without a proper frontline spinner. And as good as Nawaz has been of late, he is also not a frontline spinner in the way that Especially when Abrar you have to is. left is Um, सीधी बात है. Yeah, so I definitely would bring Abrar back. And by the way, I do think there's a longer conversation to be had about why we're not creating the kind of spin talent we were 10, 15 years ago. But खैर वो एक अलग बात है. But yeah, I would do that. I also would definitely drop Hussain Talat or Hassan Nawaz. I think you were spot on for Mhm. that. I think Hassan Nawaz should be given as many chances as he can be given, especially in yeah. bilaterals to get his form back. And on Hassan Nawaz, I also personally think that he should be, when you can afford to, I think you should send him up the order. I think थोड़ा सा हमारे पास ये होता है कि हम एक अच्छी पोजीशन में होते हैं मैच के अंदर. We saw this last time as well when Rizwan got out. I didn't understand why we sent Hussain Talat instead of Hassan Nawaz. But like Mhm. वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि वो मतलब 5 बॉलें खेल के आउट हो जाएगा. फाइन, फिर आप भेज दो हुसैन हुसैन तलत को, या आप भेज दो मोहम्मद नवाज को, या जो भी, टू फिनिश द गेम व्हाटएवर. But my और point is, like, अगेन at हाँ least वही. give him a chance. At least give him a chance to get set. Don't send him at a time where you have only like 7 or 8 overs to go, और and now he has to either hit out or get out. Like, Mhm. then और भाई you don't. डरने की जरूरत क्या है? हाँ, exactly. डरने डरने की की Yeah, जरूरत but क्या है? मतलब but बायलैटरल है Yeah, यार, वर्ल्ड कप फाइनल yeah, नहीं है जिसमें तुम अपनी yeah. एक एक मूव इतनी ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हो भाई. Exactly. जाने दो. And दूसरी बात, I would say कि हुसैन तलत in those positions is a riskier move because वो बंदा आके आपकी 20 बॉलें खा के 5 रन बना के अगर बैठ गया तो you are in a much worse position than if Hassan Nawaz comes, hits a couple of sixes and then gets out. You know what I mean? Mhm. So ऐसे yeah, and plus the yeah. kind of player that Hassan Nawaz is, that I think the team fell in love with, the country fell in love with initially, was
He was an opener, yeah. Like the guy is used to playing a lot of deliveries. To put him in these positions where you are saying कि आप बस end में आओ at the end of an inning in a pressure situation and to hit it out, especially if you're not already in good form, that's a Mm-hmm. tough ask of anybody. That's a tough So ask. I think in इस type के like ये जो young players हैं जिनको जो आपको पता है कि will who have the potential to really like deliver for you long term across the next 5, 10 years. Like you should do all that you can to put them in a position to deliver, rather than the opposite, which is sort of like put them in 100%. Mm-hmm. difficult positions and hope कि यार ये एक मतलब like वो एक And diamond in the and rough Hassan निकल ka आएगा आपके recently लिए. it's very obvious that Hassan is trying to hit his way into form, right? Yeah. बस Yeah, वो like that jump out, the other day was like ball की pitch से इतना दूर था, it was just कि यार अच्छा मैं अगर निकल के एक छक्का मार दूंगा तो मेरा confidence that Yeah. by that Yeah. extent ऊपर चला जाएगा, right? Fish And कर that's रहा था. That's true. like a really terrible position to be in as a player, right? yeah, कि यार yeah. तो I agree with you कि pinch hitter please उसको use करना बंद करो. He has a genuine hitting power, and use him as much. I fully agree. So yeah, I think on Me that too. thought, Me So too. just best of one more, luck to the just team. one more thing Ah, I would say is on the bowlers that we are playing. I think that against Sattar, I think you're mostly right in the sense that like हमें definitely Abrar needs to come back. And the question of whether we should play three pacers or we should have the extra spinner. I think that's a bit of a toss-up for me, given these pitches, because it's playing weirdly. I felt like in the first ODI, I felt like we missed Wasim and having a sort of like third proper Agreed. pacer in that Mm-hmm. sense. But Mm-hmm. then today I felt like we missed a spinner. So it seems like a bit Because of वो a सही tough वाला call. लग ही नहीं था And ना. That was the problem today. nahi, but also if you look at Proper. South Africa, first ODI के अंदर they had like their pacers weren't really doing much. So Mm-hmm. nor were their spinners really. मगर आज के मैच में उनकी spin was what sort of our undoing in the sense कि like हम बिल्कुल नहीं runs बना पा रहे थे. So I don't know, bit of a toss eh, up. I definitely eh, bring Abrar back. I definitely 100%. keep Wasim because I think he deserves more than one match to show what he can do. Indeed. And yeah, Which, yeah, I wouldn't mind dropping one of Shaheen on the seam if you have to be honest. Shine is यार मसला ये है अब शाहीन की कैप्टनसी का ये मसला है कि captain भाई है. Yes, शाहीन शुड नॉट बी प्लेइंग शाहीन 140 में बॉल कर रहा है ही इज रिवर्सिंग ही इज हाँ बॉलिंग हाँ फर्स्ट हाँ, सब मुझे he's कुछ doing उसके कर रहा है. fine. लिए वो बंदा वर्ल्ड कप की क्योंकि अभी सारी चीज क्या है वर्ल्ड कप पे प्ले लाइक टू सी बिकॉज जो मैंने पूरी बात करी जहां पे हम प्लेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बाय द वे जस्ट कंफर्म्ड आई हैड अ सस्पेशन दैट हसीबुल्लाह इज इन द स्क्वाड राइट वाज अ लिस्ट एवरेज Hasibullah ऑफ is his 51 name. with a strike rate of 89 and he's a wicket keeper batter तो हम बात Yeah. जो कर रहे थे He's, भाई yeah. आई वुड Full-time ऑनेस्टली wicket से keeper भी है. बैट फॉर रिजवान ठीक Yeah, है I नहीं नहीं, agree. for I sure, for want to see sure, for sure. what this kid can do. और हाँ हाँ अगर हाँ हाँ हाँ. फ्रंट लाइन स्पिनर भी टेस्ट करना है by the way now also Abrar by the way there's zero doubts in my brain that Abrar is on that plane to Sri Lanka right he's done right Faisal Ikram is another your upcoming guy who जिसको आपने स्क्वाड में रखा है and by the way we do this way too often Yeah, Hasibullah yeah, probably squad में has been रखते हैं. on like five Yeah. six tours और कुछ नहीं खेलता यार कुछ मतलब Yeah, again Yeah, तो Hasibullah we've I also would spoken. actually say Hasibullah बस we've spoken about before also. Hasibullah absolutely throw it up bring him in. खिलाओ यार सबको बस Bring him सही है in. बस हार जाओ आई because एम हैप्पी 150 yeah. रन से हार जाना कोई बात Yeah, नहीं because रिजवान में भी कितना ठीक 2 है साल yeah, बचा है ब्रो. 1.5 yeah. साल बचा है. The only time that हमारे पास इतने थोड़े like करेज आती है कि हम ये सब चीजें करें जब हम लोग like sort of पहले दोनों ओडीआई जीत जाते हैं और तीसरे में हमें पता होता है हाँ डेड हाँ. रबर है. Yeah. अब मसला ये है कि क्योंकि ये अब एक sort of final बन गया है for some reason our management is going to think this is the be all and end all of all matches and अब हम अपने इट इज absolute like top team को खिलाना पड़ेगा to win. Uh, which is unfortunate, but I have actually zero doubt in my mind that ये जो भी हम बातें कर रहे हैं सारी ट्रायल करने की ये करने की ये नहीं होने वाला. Of course, naturally. हाँ हाँ फैसल एंड असीम आर नॉट प्लेइंग दैट भाई No उनका chance. काम है टीम Zero चलाना. chance. हमारा काम है पॉडकास्ट करना. सही हम है पॉडकास्ट कर रहे हैं. बट आई थिंक हाँ जी. ऑन द as the and जब पूरी rant करते हैं best of luck to the team I hope they win I Yeah. hope the try to players and I hope the new ones are the ones to shine out and for the last 3 years counting वो मैच है यार भाई प्लीज आ जा यार वापस बस and I think on that note लेकिन let's वैसे अच्छा wrap up वैसे it's for interesting to today see how much Bobby's fandom is unlinked to his बैटिंग फॉर्म. वो कुछ भी करे, वो 2 रन भी करके चले जाए, सीन उसका वन है. तो Yeah, इसलिए भी थोड़ा आराम में बैठा रहा था. इसलिए भी थोड़ा chill. eventually it will It will show यार I up catch in up. think his Has to. fandom. Has to. But Has Khair, to. anyway, हाँ here's to a third ODI with a Babar Mm-hmm. century and thumping win with a bunch of new talent being Mm-hmm. unearthed.
let's see how much of that is going to Wasim, happen. But Wasim Fiver, let's go. always hopeful. Thank you, boys. Until next time. Until next time, another City Point. Bye.